बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज बीदर पहुंचे। यहां उन्होंने श्री नानक झीरा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कक्षा 12वीं की गणित विषय का पेपर लीक होने से सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी आज पेपर लीक कांड का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों को हाईटेक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आतंकियों से लड़ने के लिए सीआरपीएफ में एक बख्तरबंद वाहन शामिल किया गया है, जिसे CSRV यानी क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल कहा जाता है। मुंबई में बाबुलनाथ मंदिर के शिवलिंग में दरार आने से हड़कंप मच गया है। मामले को देखते हुए शिवलिंग में पानी और दूध चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2023 की बैठक हुई, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए और अपनी बात रखी। यही नहीं, चर्चा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन युद्ध के लिए एक बार फिर रूस को आड़े हाथों लिया और कहा कि रूस को रोकना बहुत जरूरी है। Have an effect here. If we allow with impunity Russia to do what it's doing in Ukraine, then that's a message to would-be aggressors everywhere that they may be able to get away with it too. जबकि रायसीना डायलॉग 2023 में बातचीत के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। Everybody is asking when Russia is ready to negotiate, when Russia is ready to negotiate. The West continuously is saying that it is not time to negotiate yet because Ukraine must win in the battlefield before any negotiation. And Zelensky himself, nobody calls on Zelensky asking him when he is going to negotiate, but you should have known, preparing for this topic at this meeting, that in September last year, Zelensky signed a decree making it a criminal offense to negotiate with Russia as long as Putin is president. रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो दूसरे देशों में अपने हितों के लिए जंग को जायज ठहराता है, लेकिन जब बात रूस की आती है तो मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाने लगता है। और रायसीना डायलॉग में सर्जेई लावरोव ने इस आरोप को जायज ठहराते हुए इराक से लेकर सर्बिया, अफगानिस्तान और युगोस्लाविया तक का उदाहरण दिया। Have you been interested during these years what is going on in Iraq, what is going on in Afghanistan? Have you been asking the United States and NATO whether they are certain of what they are doing? When they now Scholz, Baerbock, Macron and others say this is the first time when the OSCE Helsinki Final Act is being violated. They don't remember about 1999 when Serbia was bombed, when Joe Biden, being a senator at that time, he was bragging that 1 year before the bombing of Serbia, I promoted this approach, and I believe that we have to bomb them out into peace. रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने कहा कि उनके देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। If you believe that the United States has the right to declare a threat to its national interest, any place on earth, like they did in Yugoslavia, in Iraq, in Libya, in Syria, 10,000 miles across the Atlantic Ocean, and they have the right to do so, and you don't ask them any questions. वहीं रायसीना डायलॉग के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ती चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने माना कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को खत्म करने में भारत अहम किरदार अदा कर सकता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी योंग ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत के बिना पुनर्गठन का कोई काम नहीं किया जा सकता। The extent to which India is a critical power, a great power in the region, that there is no reshaping of the Indo-Pacific with the attributes that Australia would seek without India.
I'd also make the point, and I think Jai engages with the world in his narrative around it, but also Prime Minister Modi. India is a civilizational power, brings a different perspective to some of the challenges of these times. Bring the mic closer to you. बैठक के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमारे लिए हिंद प्रशांत महासागर का क्षेत्र भविष्य के लिए बेहद अहम है. As you might say, we can run and chew gum at the same time. And for us, the future is so much in the Indo-Pacific. Our engagement throughout the region, both through the Quad and in other ways, is as comprehensive and as deep as any time I can remember. वहीं G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से दूर रहे जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी रायसीना डायलॉग में शामिल हुए. उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही. But through those cooperation and including 4 of us, and then the 2 blue Pacific areas like Pacific Island countries and ASEANs and also South Asia, this understanding and mutual understanding and cooperation, then they will make some combined will to cherish the same value like democracy, freedom. दिल्ली में हुए रायसीना डायलॉग की बैठक से पहले क्वाड के सदस्य देशों यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई, जिसमें क्वाड को मजबूत बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई. जबकि इसके बाद चारों देशों के नेताओं ने रायसीना डायलॉग में एक साथ हिस्सा लिया और बताया कि कैसे क्वाड क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अहम किरदार अदा कर रहा है. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्वाड को ताकतवर मुल्कों का संगठन बताया, जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहा है. Where the Quad is a force, I believe, for good, positive, affirmative action. What's in so many ways important about it is this. First, we start with the proposition that virtually none of the challenges that our people are facing and that people around the world are facing can be effectively dealt with by any one country acting alone, whether it's the United States, whether it's India, whether it's Japan, whether it's Australia. And given that basic premise, it makes sense for us to start by finding like-minded groups of countries. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि क्वाड कोई सैन्य संगठन नहीं है, तो वहीं जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी भी इससे इत्तेफाक रखते नजर आए. Like Tony said, this Quad is not for security issues, not military issues, but practical cooperation like everybody. जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि क्वाड किसी भी देश के खिलाफ नहीं है. To me, if your origins are in common good, there's an innate virtue in your existence. Okay, so we do stand for something. What I would not like to be defined as is standing against something or somebody, because that diminishes me. That makes it out as though some other people are the center of the world and I'm only there to be for them or against them.